We are waiting for Mr. Umar to join us. Hello. Can you hear me? What's up? We have 23 participants now. Hello. We welcome Mr. Umar is here. Yes, Mr. Umar. अच्छा, तो अब ये unfortunately this has happened and technology, sir. So there is I think if I had to find somebody and meet somebody, I can guarantee you, if I decide, I will look at all different ways and means and options. I will find the person. I will make sure I meet him. And I think this determination should be with you. Why? Because आपके साथ जाती हुई है. I am very clear. I think this is unethical. Any company, I know the companies which have done this, unfortunately, but I think this is extremely unethical. That after you confirm somebody, you tell them no. But how to go about it? Use as many different ways and options as possible. Ask friends, ask relatives, look around, get on the net, check on him, check him on LinkedIn, check him on email, check him on different ways that you can contact. But it has to be done on your own. Unfortunately, I don't think if anybody, I don't know of a case where somebody has gone to court. By the way, there is the court option is maybe there. I understand that Islamabad High Court looks very quickly into such notices. Maybe. So all I can say is that maybe its legal course of action may be the last resort. I hope I'm able to answer that to your query. उमर साहब, मैं कुछ बात कर सकता हूँ? जी, please. This is from Mohammad Kashif Siddiqui. Please. मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक करूंगा. और दूसरी बात ये कि जो अभी बीइंग अ HR पर्सन हमारा रोल है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, वो पॉजिटिव रोल इस तरह होना चाहिए कि लॉकडाउन के हवाले से जितने भी डेली वेजर्स और ये सारी बातें अभी माशाल्लाह उमर साहब कर चुके हैं, बट इसको मैं थोड़ा सा अपने एक अंदाज में बोलना चाहूँगा कि बिल्कुल जो भी हमारे कवानीन हैं, जितने भी लेबर्स हैं, कन्वेंशंस हैं, आर्टिकल्स हैं, उन सबको तो हम देख रहे होते हैं और उन सबको हम अपने जितने भी ऑनर्स हैं
उन सब से बात भी करते हैं, लॉ के रेफरेंस वो बोलते हैं हमें, तो हम वो दे भी रहे होते हैं। बट ये सारी की सारी चीज़ें हमारे दीन इस्लाम ने भी हमें बताई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। WPPF के हवाले से भी कई सारी हदीसें जो उससे लिंक कर रही होती हैं वो मौजूद हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात मौजूद हैं। अगर हम इन चीज़ों को, हमारा रोल अभी यही होना चाहिए कोविड-19 में HR पर्सन का और कंप्लाइंस वालों का, कि वो अपनी जितनी भी उसकी लीगल डॉक्यूमेंटेशन या उसके लॉज हैं उसके हवाले से तो बात करें ही करें, लेकिन एक इस्लामी मुआशरे के हवाले से भी हमारी एक जिम्मेदारी बनती है कि उनको इन चीज़ों के बारे में बताएं कि ये देखें, आप इस लॉ से बचने के लिए जो भी अपनी कॉस्मेटिक डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, देखें हम सारे एक ही प्लेटफॉर्म से हैं और हमें पता है कि हम क्या क्या कर रहे होते हैं कंप्लायंस में भी और HR में भी, सही बात है। गवर्नमेंट से, और जितने भी हमारे जो बायर्स हैं उनके ऑडिट को क्लियर करने के लिए बहुत सारी हम लोग एफर्ट्स कर रहे होते हैं, जो हम सब भूल जाते हैं। आई एग्री। तो अब ये जो हम दीन इस्लाम की बात करेंगे ना, जब उसमें हम अल्लाह पाक को कभी भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। माज़अल्लाह, अल्लाह पाक हमारी शरीयत से ज़्यादा करीब है। अगर ये मैसेज हम आगे अपने ऑनर्स को डिलीवर कर दें ये और ये सारी काशिफ साहब, इफ आई मे जस्ट ऐड हियर, आप बिल्कुल सही फरमाया, 100% आई एग्री। नाउ अच्छा, तो इसमें हाँ जी, मैं कंप्लीट करूं? प्लीज। हाँ, तो अभी जो हमारा रोल है वो हमारा रोल ये होना चाहिए कि हम किसी भी मुसीबत के वक्त जिन लोगों के लीगल बेनिफिट्स हम होल्ड डाउन कर देते हैं और उनको बता देते हैं, जैसे WPPF है, कई सारी ऑर्गेनाइजेशन दे रही हैं, बट हो सकता है बहुत सारी नहीं भी दे रही हूँ। बहुत सारे एनुअल इंक्रीमेंट जो हम लोग 2-2 4-4 महीने करके पूरा 1-1 1.5 साल उनका खा जाते हैं, उसके अंदर भी उनका हक है जो हम लोग होल्ड डाउन कर देते हैं। उसके अलावा बोनस के हवाले से भी बहुत सारी हम लोग बैलेंस शीटें इस तरह मैनेज कर लेते हैं कि हमें प्रॉफिट दिखाना ही नहीं पड़ता और उनका बोनस भी मारा जाता है। लेकिन हमें एक्चुअल बेसिस पे बीइंग HR पर्सन एंड कंप्लाइंस हमें पता होता है कि सारी चीज़ें हम लोग किस वे में कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे हमारा रोल ये है कि हमने ना तो किसी भी ऑडिटर को दिखाना है, हमने ना तो किसी भी इस वक्त इस कोविड-19 में इस फेज में हमें किसी भी ऑडिटर को सेटिस्फाई नहीं करना है और हमें किसी भी सर्टिफिकेशन के लिए काम नहीं करना है। इस वक्त हमें जो है वो इंसानियत के लिए काम करना है, अपने इस्लामी माशरे को सेव करने के लिए काम करना है और अपने ऑनर्स को बताना है कि ये हमारा एक माशी एक जो इस्लामी नजरिया है उसके हवाले से अल्लाह पाक से नहीं बच सकते। अब सारे ऑडिटर्स को दिखा सकते हैं अग्री चीजों। काशिफ साहब, आई फुल जी सर, देखिए जी आपसे बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। ओके, मेरा आपसे मैं आपको थोड़ा सा छोटा सा एक क्वेश्चन करता हूँ कि I, in my, so far that I remember, have never ever done any, I refuse to do things where I think God will be annoyed with me. Full stop. Whether job goes or not, I don't care. Honestly आपको बता रहा हूँ कि अगर हम पहले ये करते थे तो गलत करते थे, खाली हम इसलिए इसको ठीक नहीं करना चाहते कि हम अल्लाह की खुशनुदी अब चाहते हैं जब मुसीबत में सारे लोग हैं। हमें पहले भी ठीक करना चाहिए था, बिल्कुल, और अभी भी हमें ठीक करना चाहिए। क्या इन लोगों को बाकियों को नहीं पता, बट दिस इज वेयर आई फील द रोल ऑफ HR कम्स इन। आपने अगर वो जो शुरू में मैंने आपको पॉइंट्स दिए थे उसमें कहा था कि इट इज द प्रेजेंटेशन विल हैव टू बी मेड बाय HR टू द CEO, टू द ओनर, टू द टॉप मैनेजमेंट, के आपने उसको हर एंगल से ब्रोच करना है, इंक्लूडिंग ह्यूमैनिटी। हकूकुल अबाद ये आपके सबसे पहले आते हैं। हकूकुल अबाद का कोई वो नहीं है, आप मेरे साथ, मैं आपके साथ इस्तेमाल करूं, उसका अल्लाह ताला माफी नहीं देगा मुझे। यू हैव टू एक्सक्यूज मी फॉर दैट। सो द थिंग इज कि ये कोविड-19 से खाली नहीं होना, बट हमें इस वक्त, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हमें थोड़ा सा इसको भी यूज करना चाहिए। दिस इज व्हाट आई सेड कि व्हेन आई टॉक्ड ऑफ ह्यूमैनिटी, आई वाज टॉकिंग इन अ वेरी ब्रॉड टर्म, क्योंकि देयर कैन बी मुस्लिम्स, देयर कैन बी हिंदूज, देयर कैन बी क्रिश्चियंस, देयर कैन बी सो मेनी डिफरेंट फेथ्स, नॉट नेसेसरीली इस्लामिक, लेकिन हर फेथ के अंदर हर जगह सपोर्ट है। आई विल गिव यू अ स्मॉल एग्जांपल ऑफ ऑस्ट्रेलिया।
ابھی آسٹریلیا میں ایک جگہ کسی I just came to know today کہ کسی نے پارٹی کی 26 لوگوں کی برتھ ڈے سیلیبریشن جس میں there were 26 people. The Australian government fined 26 people $1,000 each. So that party, they were white Australians, by the way. Gore, they were fined that party cost them $26,000 plus 14 days quarantine for everybody. کیا یہ ہمارے یہاں ہو سکتا ہے؟ نہیں ہوا. تو ہمارے بہت ساری کمپلشنز ہیں, لیکن I think there is no justification for any owner or CEO to be firing people at this stage. I think HR is the one who you have to convince them. You have to give them the solutions. You have to give them the arguments. If you convince them, great. Because if you don't convince them, I think the failure is HR. It is not anybody else's failure. بالکل آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. My take on this. آپ نے بالکل صحیح فرمایا. بس میں Any other question, gentlemen? Ladies. جی عمر صاحب اگر اجازت ہو تو میں کچھ ایڈ کروں. سوری آپ کچھ کہہ رہے ہیں. جی کاشف صاحب پلیز گو اہیڈ. بتائیں. جی ہاں میں یہی بات کرنا چاہ رہا تھا. عمر صاحب جو بات کر رہے تھے سر پلیز ایڈ پلیز اینی ٹائم. ہاں تو اس میں جو ہے وہ بالکل ٹھیک فرما رہے تھے کہ ہمیں یہ تو ڈے ون سے ہی کرنا چاہیے تھا, بٹ ہمیں کچھ ہماری جو ٹریک ہے نا وہ ٹریک ہمارا کچھ اس طرح سے ڈیزائن ہم نے خود سے ہی کر لیا کہ ہمیں بس جسٹ فور غلط ٹریک پہ جائیں گے تو بھائی سر سوری غلط ٹریک پہ جائیں گے تو غلط رزلٹ نکلے گا. بالکل ایسی اصل میں جو آپ کچھ کہہ رہے تھے. سر میں ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں میرا جو ایکسپیرینس ہے یا ایکسپوجر ہے جہاں تک ہمارے سب کانٹیننٹ میں اسپیشلی بہت سی آرگنائزیشن کلچر کی وجہ سے سفر کر رہی ہوتی ہیں. اور کلچر کہاں سے آتا ہے؟ کلچر کی آف کورس کلچر ڈرائیو ہوتا ہے ویلیوز کے ساتھ, جس کے ساتھ ویلیوز کے ساتھ پھر آپ کے بیہیویئرز ڈیولپ ہوتے ہیں, اور وہ بیہیویئرز ریفلیکٹ کرتے ہیں کلچر کی فارم میں, جس کو ہم کہتے ہیں جی وہ لیگ پولنگ کر رہا ہے, جی کمپنی میں پالیٹکس بڑی ہے, جی اور جی کام نہیں کرنے دیتے, جی وہ فلانا ہو جاتا ہے. تو ایچ آر کو میرا خیال ہے ایک اور میری اپنی رائے غلط ہو سکتی ہے, میرا خیال ہے کہ ایچ آر کو کلچر کا کسٹوڈین بھی ہونا چاہیے. اور وہاں پہ یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں کہ ہم ایز اے مسلمان غلط کام نہیں کرنا چاہیے, اور ایز اے ہیومن بینگ اگر آپ ہیومن نیچر پہ بھی جائیں تو گورا ہمارے سے آگے اس لیے نکل گیا کہ اس نے یہ اچھی چیزیں جو ہمیں ویسے ہی ریلیجن میں مل گئی تھی ہم نے اڈاپٹ نہیں کی, اور وہ گورا اڈاپٹ کر کے وہاں بیٹھا ہوا ہے. وہ نہیں وہ کام کی طرف توجہ رکھتا ہے. کلچر کو کیسے ڈرائیو کرنا ہے؟ اب کلچر کے لیے سب سے یہ جو کلچر اگر ہم دیکھیں تو کئی چیزیں جیسے اسٹریٹجی ہو گئی, اسی طرح کلچر بھی ٹاپ ٹو باٹم ٹرکل ڈاؤن ہوتا ہے, جبکہ انوویشن جو ہے وہ باٹم اپ جاتی ہے. تو اگر کلچر کو ہم نے ڈرائیو کرنا ہے ہمیں ٹاپ سے, تو HR must take a lead to talk to the senior management and convince them that we need to work on our culture. And Absolutely right. That does 100%. not exclude the senior management as well. بالکل agree with you, sir. 100%. I would agree. سر بالکل 100%. The culture جو ہے وہ HR ہی اس کا کسٹوڈین ہے, irrespective. Any organization's culture is dictated by HR. How the values are implemented, how the values are enforced. آپ کو میں بتاؤں, ہم نے ایک ایئر سیال کے لیے we did the organization کا we did hello جی ہاں ہم نے ان کے لیے آرگنائزیشن سیٹ اپ ڈیولپ کیا. وی ڈیولپ پالیسی HR policies for them and we developed their vision, mission and values. That was with the owners of Airseal and the top management of Airseal. آپ بلیو کریں, جب ان کی ویلیوز ہم نے ڈیفائن کی, انہوں نے خود بنائی اپنی ویلیوز, تو ان سے ہم نے کہا کہ واٹ از دا لیول آف ٹالرنس فار دیز ویلیوز دیٹ یو ول ہیو. اینڈ آپ جب بلیو کریں, جب اس پہ ڈبیٹ ہوئی تو سمپل سی بات تھی کہ اگر ایک ایئر ہوسٹس ہے
उसको एक डायरेक्टर अपना कार्ड देता है, कहते हैं कि यू नो यू मीट मी आफ्टरवर्ड्स एंड दिस इज माय कार्ड, आई एम अ डायरेक्टर इन एयरसेल, तो व्हाट शुड बी द पेनल्टी फॉर दैट? तो उस वक्त आंसर ये आया कि आई थिंक वी द एयरलाइन वी मस्ट वार्न देम. सो जब डिस्कशन हुई थोड़ी सी, उसके बाद उनका डिसीजन ये आया कि वी विल फायर दैट गाय. व्हाई? बिकॉज वी विल नॉट एक्सेप्ट इट. अच्छा, नाउ दिस इज वेयर विद द एचआर है ना, एचआर वैल्यूज जो इम्पोज करेगा, इट हैज टू बी इन टोटल कोलैबोरेशन एंड कोलूजन विद द owners or CEO and the top management. 100% with you on that, sir. Thank you, sir. Thank you. Gee. Any question from the other participants? Hello. Yes, please, Nubaira Khan, you can ask any question. Yeah. Asante, sir. I'm working at Hilal. My question is, the government of Sindh Labour and Human Resource Department issued an order on 23rd March saying that you cannot cut down salaries and you have to give whole salaries or wages to all the employees. So if the HR, as you suggested, can come up with solutions like cutting down benefits, and so can we cut down salaries, and should we look at the legal aspect of this solution too? And should we have consent from the employees too regarding this, as it may be illegal considering the notification which came from the government of Sindh department? Nubaira, it's a good question. लेकिन please understand कि जो labor का सवाल है ना, labor is a workman, and उनकी तो किसी सूरत में कहीं भी हमने recommend नहीं किया कि आप करें salaries deduct करें. We talked of the top managers, we talked of the senior managers, middle managers, and junior management only. Workers जो है उनकी salaries किसी जगह पे भी cut नहीं होती. And I think we have to 100% abide by the laws of the country, which says that no deduction. No, workforce की तो deduction होनी ही नहीं है. So no issues. You have to please pay them what they deserve and what is their normal salary. All right. Okay. Thank you so much. You're welcome. Anyone from the participants? There is a few questions in the chat box. Let me read. So, I think no question there. I think हो गए answers. हो गए sir. Chalaji, thank you so much. It has been a great pleasure. Hopefully next time we will have. We'll try and be a little more interactive. I try to keep the presentation short so that we could have more time for question answers. If anyone have any question, so he can personally ask to Mr. Omar Qureshi. I will share his number to here. So where is your number? 0300 8240 456. 456. 8240 456. Yeah. हाँ, आप मुझे LinkedIn पे या WhatsApp पे और you can connect. Give me a direct call. No issues. Absolutely no issues at all. Thank you very much. May I just, if it's possible, can I just ask one question? Rather, it's a request. And I must say, you guys are doing everyone should applaud you for the fascinating job that you all are doing here. It's a great service to our country and to everyone. Really, I just wanted to ask the question, just to what one of the participants, Nubaira, said here regarding the Home Department order which prohibits the employers from layoffs and to pay full wages as paid leaves for the duration of the lockdown. Now, this has been challenged by the Employers Federation of Pakistan, some of their members, in the Sindh High Court as a constitutional petition. And the hearing, I understand, the next hearing is on the 23rd. I just would appreciate if you can use this platform to, press on the conscience of all the stakeholders involved, including the honorable judges of the court, to decide on the matter, urgently on priority basis, so that there is clarity, for all the stakeholders who are concerned and who are involved in this scenario, which shall be also great service to this country.
That's all I had to say. Thank you very much. Noman sir, thank you so much for this suggestion. I think all of us can use our different forums to try and inform people, concerned people. Definitely, at least I will use some of the forums to which I am a member of to convey this, that this has to be done. There are no two ways about it. Thank you, sir. Appreciate it, man. Welcome, sir. Thank you so much. Thank you, Umar Sahab. बहुत शुक्रिया. It was a pleasure hearing you, and Shehzad sir, such a pleasure meeting you on this, and inshallah, when things improve, we can always all join for a cup of coffee. Dear members, dear participants, there is a one request. We will post this about this session at LinkedIn. You are requested to please pass your comments at the LinkedIn session. जिस तरह भी आपको ये अच्छा लगा या क्या लर्निंग आपकी क्या टीप या क्या टेक अवेज हुए फ्रॉम दिस lesson, please share your thoughts. Please share your thoughts. Sure. Thank you. Thank you very much. Thank you very much for joining us. There is a. Okay, bye. Take care. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Allah Hafiz.